12. Reproduction in plants. The production of new individuals from their parents is known as reproduction. It is one of the most important characteristics of living organisms. This process varies from one group of living organisms to another. There are different modes of reproduction in plants, which we shall learn in this chapter. Parts of a flowering plant. In class 6 we have learnt about different parts of a flowering plant. Most plants have roots, stems and leaves. These are called the vegetative parts of a plant. The flowers perform the function of reproduction in plants, so flowers are the reproductive parts of a plant. A flower may have either the male part or the female part or both. The male part produces male gametes, whereas the female part of the flower produces female gametes. Reproduction in plants can take place both through its vegetative parts and reproductive parts. Let us study how plants reproduce. Methods of reproduction in plants. Asexual reproduction in plants. The production of new plants from a single parent without the involvement of gametes is called asexual reproduction. Since fusion of gametes is not involved, no seeds are formed in asexual reproduction. Thus, in asexual reproduction, new plants are obtained from a single parent without the formation of seeds. The plants produced through asexual reproduction are exactly identical to the parent plant. Sexual reproduction in plants. The production of new plants from the existing parents by the fusion of their gametes is called sexual reproduction. Asexual reproduction in plants. Asexual reproduction in plants takes place by fragmentation, spore formation and vegetative propagation. 1. Fragmentation. हेलो, लेसन नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस लेसन में प्लांट्स की जो रिप्रोडक्शन होती है उसके बारे में बताया गया है। रिप्रोडक्शन होता क्या है? अपने जैसे ही जीवों को या अपने जैसे ही संतान को पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। इंसानों में ये सबसे मोस्ट करेक्टरिस्टिक होता है और ये एनिमल्स में भी है और प्लांट्स में भी है। आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि पौधे के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट, स्टीम और लीव्स, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम होते हैं। और जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है प्लांट्स का, और इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों गेमेट्स होते हैं, जिससे कि न्यू प्लांट्स बन सकता है, जो फॉर्मेशन ऑफ सीड होता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन टेक प्लेस बोथ थ्रू द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो अब इसमें ये बताया गया है कि पौधे दो तरह से प्रजनन कर पाते हैं, दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है इनका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें एक नया पौधा बनता है लेकिन सिंगल पेरेंट्स के विदाउट द इन्वोल्यूशन ऑफ गेमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसके अंदर सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन हो जाता है और यानी फॉर्मेशन ऑफ सीड बन जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब न्यू प्लांट बनता है तो इसके अंदर पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उन दोनों के गैमेट्स होते हैं, फ्यूज होते हैं, उसके बाद बीज बनता है और जिससे कि नया प्लांट बन पाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहले फर्मेंटेशन। Many times, we see green patches floating on the surface of stagnant water bodies like ponds, ditches and lakes. The green patches are due to the growth of green algae called spirogyra. It reproduces by the asexual method of fragmentation. When spirogyra matures, it breaks up into 2 or more fragments. Each fragment then grows and forms new spirogyra. This process of reproduction is called fragmentation. Fragmentation is a process in which the body of a plant breaks up into 2 or more fragments, where each fragment grows and matures to form a new plant. Parent cell, fragments, new individuals. Fragmentation in spirogyra. Spore formation. Spore formation is the most common method of reproduction in ferns. फ्रेगमेंटेशन। आपने पानी के अंदर ग्रीन पैचेस देखे होंगे, वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, डिचेस एंड लेक्स के अंदर। ये जो ग्रीन एल्गी होती है इसको स्पायरोगायरा बोलते हैं। ये जो स्पायरोगायरा होता है ये इसका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से होता है। स्पायरोगायरा के अंदर ये एक या
दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए प्लांट इनटू टू फ्रेगमेंट्स वेयर ईच फ्रेगमेंट ग्रो एंड मैच्योर टू फॉर्म ए न्यू प्लांट्स इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। यानी कि जब कोई भी बॉडी टूट कर दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट बना देती हैं और वो फिर मैच्योर होकर वो भी एक अलग से एक नया प्लांट बनाते हैं और वो उस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और नेक्स्ट वो भी आगे डिवाइड होके नए फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। इसका एग्जांपल स्पैरोगैरा या ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। And mosses. The spores are the asexual reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions, such as high temperature and low humidity. So, they can survive for a long time. Under favorable conditions, a spore germinates and develops into a new individual. The spores are produced in structures called sporangia, singular sporangium. Vegetative propagation. स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन ये इट इज़ अ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन फर्म एंड मोसेस। आपने ब्रेड देखी होगी, उसके ऊपर स्पोर फॉर्मेशन होती है। जो हाई टेम्परेचर के अंदर या अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर स्पोर अपने आप फॉर्मेशन हो जाते हैं और ये एसेक्सुअल मेथड होता है। इसके अंदर द स्पोर होता है आ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। जो स्पोर फॉर्मेशन होगी इसको स्पोरेंजिया बोला जाता है। और जो फर्न्स होते हैं और मोसिस के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं ये स्पोर्स। नेक्स्ट पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Vegetative propagation is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from vegetative parts of the plant, like roots, stems and leaves. Since reproduction is through the vegetative parts of the plant, it is known as vegetative propagation. A. Natural methods of vegetative propagation. A. Vegetative propagation by stems. 1. Stem tuber. The underground stem of potato is called stem tuber. It has buds called eyes. If a potato is cut into pieces and planted in the soil, the cut parts with